Hello students, welcome again. We have started Indian economy on the eve of independence, which is a part of Indian economic development, right? First part we have studied. In that we have studied what was the economic development and what happened during the British period and on the eve of independence after British has come. Today we will start with agricultural sector. First, agricultural sector. What is agricultural sector? Indian economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian, means we were having most of our activities agricultural activities, as about 85% of the country's population were living in villages and they lived on agriculture. Their main aim, their main work, their main occupation was agriculture. However, the agricultural sector continued to express stagnation and deterioration, but due to the British forces, they have applied other problems for the farmers, and due to this farmers problems, the agriculture was going down and it experienced stagnation and deterioration. Now, agricultural sector on the eve of independence. What happened in agricultural sector? Agriculture became backward. Backward means whatever we were doing, it was not able to cope up with the population of the Indian people. Okay, it became stagnant and non-vibrant under the British rule. It was becoming stagnant and non-vibrant, means they are having livelihood of agriculture, but they were not able to satisfy their own country people. What were the points? First, weak productive accumulation. At the time of independence, the means of production were defective. There were no proper fertilizers, machines, etc. So the production was not very good at that time. And if there is no proper production, they can't satisfy more and more people at that time. This was one of the problem of agricultural sector on the eve of independence. Second was unemployment and underemployment. There was unemployment, means everybody was not getting proper work, so they were not having work and they can't earn money, so they were facing money problems at that time. Underemployment also was there because there was rise. Whatever work was there, it was not grown up, and proper facilities and income was also not generated. This was there because of British period. Low levels of production and productivity. Now the agriculture depends on land, but the land's productivity of soil, climate, region activities, irrigation facilities, this all changes from year to year, or it depends on literacy rate, technical skills of cultivators, agricultural implements, average income of cultivators for the basic amenities of life. But the farmers in India were very poor, they were undernourished, had no stamina, because they were so poor that they were of hunger, they were starving of hunger, they were not having proper food for themselves, they were not having any proper work. The productivity of labor in India was also very low. So agricultural production in India was less than its demand. It produced only 508 lakh tons of food grains in 1947-48.
At that time, just 13 crore hectares of land was under cultivation. We were having extra land, but all the land was not cultivated. So there were low levels of production and productivity. Next point, subdivision of land holdings. Land holding means what? It is defined as the area of land which a person or family owns. That area of land which a person is having or a family is having. It can be a piece of land or a number of small scattered pieces of land. When there was, at the time of independence, what prevailed was division, subdivision and fragmentation land holdings. Means the land was divided. Some were having land in one area, some other area subdivided. One father must be having 4 sons, and that land is divided into 4 parts for that 4 sons. The fragmentation, because of that, they are having so small land that the cultivation is not proper, and they are not able to fulfill the needs of their own family. These all problems were done at the time in the Indian agricultural sector on the eve of independence. Okay, understood? Now next, what were the causes for stagnation of Indian agriculture during colonial period? What were the causes? Why? क्या हुआ? क्या reasons थे? What were the causes? ठीक है, there were 3 main causes. The first was land revenue system, ज़मींदारी सिस्टम. ज़मींदारी सिस्टम बोलो इसको, महालवारी सिस्टम, रॉयटवारी सिस्टम, ये सब यानी लैंडलॉर्ड्स वेर द ओनर्स ऑफ द लैंड, राइट, एंड दे यूज टू टेक, ज़मींदार जो थे वो फार्मर्स को ज़मीन देते थे. दे यूज टू टेल देम फॉर कल्टिवेशन, और दे वेर द मिडल मैन between the cultivators and the government, right? Under the system, the intermediaries यानी जो ज़मींदार थे वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे, because they were acting as a link between the government and the farmers. और वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर अमाउंट में गवर्नमेंट से लेते थे, बट फार्मर्स से बहुत कम दामों में, बहुत सस्ते दामों में परचेज करते थे हर क्रॉप्स को. Second was forced commercialization of agriculture. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी उन्होंने एक मार्केट डेवलप किया, क्योंकि हमारे फार्मर्स को जो भी क्रॉप्स होते थे वो सेल करने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि अब फूड क्रॉप्स की बजाय कैश क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो करो. फूड क्रॉप्स यानी राइस, व्हीट, ये सारी चीज़ों के बजाय आप इंडिगो, इन सब की फार्मिंग कीजिए. तो उस वजह से सेल मार्केट में बढ़ रहा था. और प्रोडक्शन कैसे हो रहा था? नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन. वो ये बोल रहे थे कि नहीं, आपके पास जितना भी हो रहा है प्रोडक्शन, यू हैव टू सेल इट इन द मार्केट. यू हैव टू सेल इट इन द मार्केट मतलब कौन सा? एक्सपोर्ट होता था. ये सब कुछ मोस्टली इंग्लैंड जाता था, ये हमारे यहाँ कंट्री में भी नहीं रहता था. और कल्टीवेशन ऑफ जो कमर्शियल क्रॉप्स, दैट इज़ इंडिगो, इंडिगो की कल्टीवेशन ज़्यादा होती थी बजाय के फूड क्रॉप से. उससे वजह से हमारे देश में फूड की भी प्रॉब्लम्स होने लग गई. उस वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स, फेमिन्स और पॉवर्टी ग्रो होती गई. तो लेस सेल्फ कंजम्पशन एंड लार्जर पार्ट ऑफ प्रोड्यूस फॉर मार्केट सेल. इनको मार्केट की सेल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश हमारी इंडियन एग्रीकल्चरिकल पीपल यानी फार्मर्स को करते थे. दिस वॉज द रीज़न फॉर बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर. नेक्स्ट वॉज पार्टीशन ऑफ कंट्री. हमारे 1947 में इंडिया वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स विथ एग्रीकल्चर. अब उसके बाद जो जितनी रिच प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी, जो रिच प्रोड्यूसिंग सिटीज़ थी, जैसे पंजाब है, सिंध है, उसका कुछ पार्ट बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में चला गया. तो उस वजह से भी हमारे कंट्री की एग्रीकल्चरल चीज़ों को
इफ़ेक्ट हुआ। सो फूड क्राइसिस इंडिया में और बढ़ती गई। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, पार्टीशन हुआ था, तब उस टाइम पे ईस्ट इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इस तरह से जो भी चीज़ें थी, जो लैंड था वो पंजाब का लैंड, सिंध का लैंड, पाकिस्तान की टेरिटरी में जाने से हमारे यहाँ हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, राइट। ये सब भी हम लोग को प्रॉब्लम्स थोड़ी सी फेस करनी पड़ी। सो ये हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर कम से कम काम करने के वजह से स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इस तरह से बहुत ज़्यादा होता रहा। ये ब्रिटिश पीरियड से चला था, लेकिन 1947 में भी इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट लोगों के ऊपर आया था। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत अच्छे से हम लोग अगर मूवी का एग्जांपल ले तो मदर इंडिया जो मूवी है और लगान मूवी है, इन दैट इट इज़ शोन कि ब्रिटिश हमारे ऊपर, लगान का मतलब होता है टैक्सेस, कितना ज़्यादा इम्पोज करते थे टैक्सेस, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, एंड हाउ दे यूज़ टू फोर्स अस कि आप लोगों को ये काम करना ही पड़ेगा। दिस इज़ शोन वेरी नाइसली इन मूवी लगान। एंड मदर इंडिया में ये पूरा ज़मींदारी सिस्टम कि हाउ द लैंडलॉर्ड यूज़ टू एक्सप्लॉइट द जनरल पब्लिक, और वो कैसे उनके साथ चीट करके उनके साथ कितना बुरा बिहेव करते थे, ये बताया हुआ है। दीज आर द एग्जाम्पल्स विच यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ इट वॉज टू बी डन। ओके।